Vinamr, Naina, Avni, Anushka. Is Anushka there? Ma'am, a projectile could be something which could be propelled by a external force. See, a projectile is a body which moves in a two-dimensional plane in the gravitational field of the Earth. If a body moves in a two-dimensional plane. So here we consider that the object is moving in XY plane or YZ plane or XZ plane in the gravitational field of Earth. And gravity is there exerted on the object. Okay. And because of gravity, there is change in velocity. There is acceleration in the object. An object moves in, it describes a path. And what kind of path refers to a projectile? What type of, कैसा path होता है उसका? For example, if we say that a cricket ball thrown by a player and it is not rolling on the ground, then this motion, this type of trajectory followed by the cricket ball is called projectile. And similarly, if an athlete takes a long jump or high jump, then it's this type of trajectory followed by the athlete is called the projectile. Okay, a bomb dropped from an aeroplane flying at some height. Again, the trajectory followed by the bomb is projectile. So these are the types of projectile. See, we have different ways in which we can project an object. We can project an object, horizontally. We can, project an object like this horizontally, then it follows this trajectory. And we can project an object at an angle. When we project an object at an angle, then it goes like this. So there are two types of projections: horizontal projection and angular projection. Okay. Yes. Anushka, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Now please take out your notebooks. Write the heading projectile motion. Projectile motion. So as we have discussed, there are two types of projectile that we are going to discuss. One is horizontal projection. And second is angular projection. In horizontal projection, the trajectory of the projectile is like this. So this is the trajectory followed by the projectile. यहाँ पे क्या है? We have placed an object at certain height and we are just applying force on this object horizontally. तो इसको हमने u velocity से इसको मतलब force exert किया इस पे और u velocity से object move किया. So it will follow this trajectory. It will not go straight. Why? Because there is force of gravity acting on the object, right? And due to gravity, it will follow this path. This type of projection is called horizontal projection. But if we project the object at some angle, suppose we are standing on the ground and we project the object at some angle, then it attains a height. It attains a certain height. When it attains a certain height, it is moving against the gravitational force. It reaches the maximum height, and after this height, after reaching at this height, it again moves in downward direction. So this kind of projectile motion is kind of projection is called angular projection. Okay. So now again, here also gravity is acting on the object, and due to this, it attains a height and then it comes to the ground. Okay. Please write this in your notebook. So trajectory, we will be using the word trajectory here. यहाँ पे on and off हम use करते रहेंगे इस word को trajectory को. It is the path followed by the projectile. Path followed by the projectile. Please write this. अगर हो जाए तो मुझे बता देना. Done?
Have you written? विनम्र, गर्व, अनुष्का, नैना, अवनी, मुदित, बेटा लिख लिया आपने? Yes, And ma'am. ओके, Yes, बताओगे तो ma'am. पता लगेगा ना, बिकॉज आपके कैमरास भी आपने ऑफ रखे हुए हैं. See, if we consider a point, ठीक है, कोई भी पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं इसकी ट्रेजेक्टरी पे. सपोज वी हैव कंसिडर्ड दिस पॉइंट P. So at this point P, object is moving with some velocity. Let the velocity of the object at this point be V. Okay, so यहाँ पे जो velocity है, how do we take the tangent? See, we just, sorry, we take the direction, we consider the point and we draw the tangent. Choose the point and then draw the tangent. This tangent, this direction indicates the direction of velocity. जहाँ पे ये tangent point कर रहा है, किसी भी point पे आप कर सकते हो. You can choose another point Q here, है ना, because object is moving like this. So this tangent at this point gives the direction of velocity. Okay, so किसी भी point पे you can find direction of velocity. So you can see the direction of velocity is changing. And we can also, because velocity is a vector quantity, right? Velocity is a vector quantity. And we are getting this direction, है ना? Something like this. किसी angle पे मिल रही है ना ये direction हमें. So now we can resolve this velocity into two components. As we resolve all the vectors, in the same way we can resolve velocity vector. So this is the horizontal component and this is the vertical component of velocity vector. Clear है इतना? इसमें कोई doubt तो नहीं है? No, ma'am. Okay. अब ये क्या है कि अगर भी if we assume that there is no air resistance, there are no frictional forces acting on the object, because usually अगर कोई object air में हम earth surface पे consider करते हैं, then we always expected that there is air resistance, ठीक है? But if we assume that there is no air resistance, no frictional forces acting on the object, उस पे कोई frictional forces act नहीं कर रहे हैं, किसी भी type का कोई भी ऐसा resistive force है, we can use another term, resistive forces. Okay, these are different terms, but इसका ultimately इसका same aim है कि ये forces हमारी velocity को alter करते हैं. These forces change the velocity. Okay, so air resistance, frictional force, resistive force, or we can say dissipative forces. Okay, so these are the terms that you'll find in your physics book. Okay, physics textbook में आपको ये terms मिलेंगी. तो ये synonyms ही है, consider कर सकते हो, similar words हैं. सबका मतलब ये है कि कोई इस पे फालतू का फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा जो उसकी वेलोसिटी को ऑल्टर करेगा, राइट? तो इस केस में इफ दीज फोर्सेस आर नॉट एग्जिस्टिंग, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम. इट रिमेन्स द सेम. ठीक है, यहाँ पे देयर विल बी नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकॉज यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग ऑन द object, so horizontal component is constant, or we can say acceleration along x-axis, or component जैसे velocity का component निकालोगे, in the same way you can find the, you can resolve acceleration also, है ना? Because if there is change in velocity, then the object is accelerating. So we can also resolve acceleration into rectangular components. And because velocity is constant and therefore it is not accelerating along x-axis, or we can say that acceleration ax is 0. ax is 0. ठीक है? अभी क्या है कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल का तो हो गया क्लियर, है ना? नाउ लेट्स मूव टू वर्टिकल कंपोनेंट. नाउ बिकॉज ये वर्टिकल कंपोनेंट है और वी आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना? वी आर मूविंग दिस ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी को तो वी कैन नेवर नेग्लेक्ट. तो Vy is affected by the gravitational force always. मतलब ये तो इफेक्ट होगा ही होगा, इसको तो हम किसी भी वे से किसी भी तरीके से भी cannot neglect this component because gravity exists everywhere, right? And gravitational forces, these are universal forces, they are everywhere in the universe. So Vy is affected by the gravitational force. आपका जो vertical component है, because object is moving against the gravitational force, तो वो तो effect होना ही होना. So Vy is not constant, Vy is changing in this case. And therefore there is acceleration, so Ay is not equal to 0. We have some value of acceleration along y-axis. I hope this part is clear. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. okay, great.
सी अब वी वाई जो है हमारा चेंज हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है. वाई यूनिफॉर्मली? बिकॉज जी इज कांस्टेंट. वी आर अज्यूमिंग जी टू बी कांस्टेंट. दो acceleration due to gravity also changes with height, it also changes with depth. बट अब ये तो ऑब्वियस है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को जो पैराबोलिक पाथ में जो ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है उसको एक लिमिट है हमारी कि उसको इतने किलोमीटर्स तक ही हम उसको ले जा सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट. उसको ऐसा तो नहीं है ना कि हम स्ट्रेटोस्फेयर में प्रोजेक्ट कर देंगे या फिर मीजोस्फेयर में प्रोजेक्ट कर देंगे जहां पे ग्रेविटी चेंज हो जाएगी. तो वो तो होने वाला नहीं है. तो उसको हम उसके साथ हम ऑब्जेक्ट है, बॉल है, कोई भी चीज है, उसका वी कैन प्ले मतलब इन द ट्रोपोस्फेयर ओनली. तो वहां पे वी अज्यूम ग्रेविटी टू बी कांस्टेंट. ठीक है, तो ग्रेविटी तो हमारी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो है इट इज इक्वल टू ग्रेविटी एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So we have uniform acceleration. And for uniform acceleration, velocity changes, but it changes by equal amount in equal intervals of time. So velocity is changing, but uniformly changing. Okay, velocity change तो हो रही है, लेकिन uniformly change हो रही है. So there is equal change in velocity in equal intervals of time. ठीक है, क्लियर. एंड यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. प्रेजेंट वी एक्स का जो वैल्यू है इट विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ वी वाई, और वी वाई का वैल्यू वी एक्स की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा. ये अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट गिविंग अस अ रिजल्टेंट वेलोसिटी v. ओके, दे आर जस्ट प्लेइंग देयर रोल्स बिकॉज वी एक्स अपने अकॉर्डिंग अपने फोर्सेस के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपने फोर्सेस के अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा और इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है, बट दे गिव द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेलोसिटी. एंड हाउ डू वी फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी? वो तो हमें अच्छे से पता है कि वी कैन जस्ट take the square root of we take the squares and add them and then take the square root. Okay, this is how we find um, a resultant velocity at a point. Yes, ऐसे ही फाइंड करते हैं ना. बिकॉज अगर आप 2vx vy ले भी लोगे तो क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली वी हैव cos 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इज 0. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी बाद में आके खत्म ही होने वाला है. तो we will be getting this only. Okay, now write the heading horizontal projection. Horizontal projection. So for horizontal projection, let's place the object at certain height. For this, let's draw coordinate axis first. So x-axis, this is the x-axis and this is the y-axis. And we are assuming the object we placed at certain height above the earth's surface. So we can consider this origin as the earth's surface and we have placed the object at certain height. अब यहाँ से क्या हो रहा है, या ये भी कर सकते हैं हम, एक मिनट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे डिफिकल्ट हो जाएंगे आपके लिए कोऑर्डिनेट्स असाइन करना. तो बेटर है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस वी कैन चूज origin as the position of the object. रेफरेंस फ्रेम तो हम अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपने वही लेना है. आप वो लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो. वी कैन चूज दिस एक्सिस एज द वर्ब नेम ज्वाइन नहीं किया अभी. This is the object and this object is placed at origin 0 0. So you can see initially the coordinates, if we say that object is at rest initially, so initially the coordinates of the object x naught is 0 and y naught is also 0. This is at time t equals to 0. So at t is equal to 0, these are the position coordinates of the object, x naught and y naught, they are 0. Please write this. X-axis and y-axis, and object will follow this trajectory and
it will reach the earth after time t, let's say. पहले वाला बेटर था, ठीक है? Draw this please. See, initially object is projected with certain velocity u. U is the velocity. Because this is horizontal projection, so ux is u. Initially the velocity of the object is u horizontally, and vertically we are considering velocity as u. Okay? अगर आप इसको, because आप ऑब्जेक्ट को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो हॉरिजॉन्टली. So when you are projecting object horizontally, so there is only horizontal component of the object and no vertical component. Okay, so vertical component we will take 0 and horizontal component is u. I hope this part is clear. We'll consider an intermediate position. Suppose object reaches at some point pxy, मतलब अपनी trajectory में ही है, अभी वो ground पे नहीं आया है, but बीच में ही हमने इसके path में we have considered this position of the object. ठीक है? So after time t, suppose object reaches at point p and the coordinates of point p be xy. Okay, so now we can write the coordinates in terms of initial coordinates. कैसे लिखेंगे? X पता है हमें क्या होता है? Use the second equation of motion. X is equal to x naught plus uxt plus half axt square. ये होता है x naught is 0, ux is u, and ux is u. And because we are assuming that horizontally there is no change in velocity, but beta I'm going very slow because मुझे पता है कि ये टॉपिक एकदम से नया है और अगर मैंने फटाफट करवा दिया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा. तो मैं आपको आराम आराम से आगे लेके जाऊंगी इस टॉपिक में, ठीक है? क्योंकि हमने ये भूलना नहीं है और ना ही हमें इसमें ये लगना चाहिए कि नहीं ये तो आता ही नहीं है, इससे डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है. एक्चुअल में इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है? बट बस कंडीशन क्या है कि आपको बहुत शांति से सुनना है और बहुत धीरे धीरे सुनना है. मैं अपनी स्पीड को कम ही रख रही हूँ, ठीक है? तो x नॉट इनिशियल कोऑर्डिनेट है, x नॉट 0 है, ux हमारा u है बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है प्रोजेक्ट हुआ है हॉरिजॉन्टली, बिकॉज हमें पता है ना कि हॉरिजॉन्टली देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज देयर आर नो डेसिपेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट जो हमने कंसीडर किया था प्रोजेक्टाइल के लिए, एंड बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट हेंस देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट. बिकॉज अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेट करेगा ही नहीं, तो इसलिए ax 0 होगा. ठीक है? नाउ पुट दीज वैल्यूज हियर इन दिस इक्वेशन. यू विल गेट x is equal to, this is 0, this is u, x is equal to ut, or we can write t as x by u. I hope this part is clear and closes in the box. So we can easily find, time. It's just x upon u. U is the initial velocity with which it was projected, and x is the position coordinate, x coordinate of the object after time t. Okay. Next, along this is along x axis. Now let's find along y-axis. अच्छा, अब along y-axis आप मुझे आइडिया दोगे? What should I write? इसको बस मैच करना है आपको. आप बताओ मुदित. मैम y नॉट प्लस अच्छा शुरू से y नॉट प्लस uy t प्लस y 1 नॉट by प्लस y is equal to y नॉट प्लस uy t plus 1 by 2 ay t square. yes. Okay, अभी what is y naught here, नैना? 0. Yes, y naught is 0. Okay, गर्व uy क्या है बेटा? गर्व vertical velocity, any idea? अवनी? अवनी what is uy? आप बताओगे तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, ठीक है? लेकिन मैं तो करवा दूंगी लेकिन फिर आपको आना चाहिए. uy 0 है, ठीक है? एंड व्हाट इज ay? अनुष्का?
Non-zero. Ay is non-zero, yes. But what is Ay? See, object is falling freely under the action of gravity, right? Ay is G. Yes, Ay is G. Now put these values here. Y is equal to Y naught is 0, Uy is 0. So we'll just write half GT square. Okay. And this T is X by U. So in place of T, we can write X by U. So this is half G X by U whole square. तो ये आपका आ जाएगा Gx square upon 2U square. ठीक है. Or we can write, see, acceleration due to gravity is a constant because पता है हमें gravity है, acceleration due to gravity constant होती है. अच्छा, इसके अलावा U is also constant in this case. Only this X is changing because we have different values of X at different position. If we choose some other position, if we choose this position Q, or if we can take this position R. So in these positions, we can see that X is the arbitrary, XY is the arbitrary point. These are the arbitrary coordinates. We can have anywhere these X and Y. Okay. So because X change हो रहा है और सिर्फ यही constant, बाकी सब constant है. So we can write like this as, in place of G upon 2U square, we can write K X square because X is not constant. So we'll take X as it is, and the remaining quantities are constant. So we can write in place of these quantities K. Okay. So G upon 2U square is a constant. It's K. K is a constant. Okay. So this equation is of parabola. This equation represents a parabola, parabolic path. You can see it's a parabolic path. अब जब आप 11th में हो अभी आगे आप coordinate geometry करोगे, there you'll learn about parabola, hyperbola, ellipse. Okay, तो ये आप coordinate geometry में करने वाले हो. Parabolic path ऐसा होता है, जैसे अगर आपका ये axis ले रहे हो आप, तो parabolic path is like this. Or parabolic path, we can, we can have along different axes. We can have this parabolic path, or we can have we can have this parabolic path. तो ये किसी भी साइड मूव कर सकता है, मतलब ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. तो these are parabolic paths. Okay. तो अब पैराबोलिक पाथ में क्या होता है कि अगर हमारे पास XY कोऑर्डिनेट्स है, तब हम क्या करते हैं, वी जस्ट राइट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ये इक्वेशन होता है. दिस इज द जनरल इक्वेशन. तो अब यहाँ पे वी कैन सी दैट x इज its power is 1, but here we have y square. तो एक आपका जो xy में से एक स्क्वायर फॉर्म में होगा और दूसरा ऐसे ही होगा. ठीक है, डिग्री उसका आपका जो है पावर 1 होगा. ऐसे ही अगर इफ यू राइट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है. तो इसमें आपके जो पैराबोलिक पाथ है ये ऐसे होता है. तो इसमें x का स्क्वायर है लेकिन y का स्क्वायर नहीं है ना. यू कैन हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. सो वी हैव डिफरेंट इक्वेशंस. सो ये आपकी जनरल इक्वेशन है. तो ये आपकी जो अभी जो इक्वेशन दैट वी हैव गॉट हियर इज अ पैराबोलिक काइंड ऑफ इक्वेशन. यू कैन सी दैट वी हैव y इज इक्वल टू kx स्क्वायर. तो y हमारा ऐसे ही है, इसमें कोई पावर नहीं है, 1 है, और x की पावर 2 है ना. तो जब ऐसा कुछ आता है तो वो पैराबोलिक होता है. ठीक है, ये आपको लेटर व्हेन यू मैथ्स में जब मिड में आ जाओगे सेशन के, तो यू विल गेट टू नो. नाउ प्लीज राइट दिस. Time of flight is any idea? Flight, time of flight मतलब कैसे रिलेट करोगे इसको? सोचो, माइंड लगाओ. आप एक चीज कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, एंड दिस इज द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट. इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो सकता है? खुद सोचोगे, खुद समझोगे और फिर रिस्पॉन्ड करोगे तो बेटर है मेरा सुनने से. यस नैना, यू कैन आंसर. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम हवा में रहेगा, सॉरी, प्लीज कम अगेन. कितने टाइम तक हवा में है, मतलब हाँ कितने हाँ, टाइम तक. यस, ओके, क्लियर, ठीक है, फाइन. अब बाकी और कोई? मुझे अवनी, एनी आइडिया? गर्व, विनम्र,
टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि कितने टाइम तक, एज नैना हैज सेड, कितनी टाइम तक वो हवा में है, राइट? ठीक है, तो इसमें ये है कि कितना टाइम लगा उसको यहां से सी पोजीशन तक रीच करने में, क्योंकि जब तक वो सी पोजीशन में नहीं पहुंचा था ना, तब तक वो हवा में ही था। ठीक है, और उसके बाद जब वो सी पे रीच करता है तब वो स्ट्राइक करता है सरफेस को, अर्थ सरफेस को भी कैन से। ओके, तो ये हवा में ही है अभी, और उसके बाद ये सी पोजीशन पे अर्थ सरफेस को सॉरी रीच कर रहा है, तो स्ट्राइक कर रहा है, तो वहां पे आ रहा है। ठीक है, तो कितना टाइम लगा उसको ओ टू सी रीच करने में, इस टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर? So for this, let's consider the equation y is equal to y naught plus uyt plus half ayt square. Now give me the values. Y naught is, what is the initial value of the object? Y naught is, 0. yes, y naught is 0. And uy is, uy is, 0. uy is 0. Ay is G. G. Okay. And what about the vertical height? This is the vertical height ना, covered by the object. We can consider this as h. Because अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो उसने इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया ना, मतलब ठीक है इसका एक्चुअल पाथ ये है, बट इसका जो डिस्प्लेस, मतलब अगर हम वर्टिकली देखें तो वर्टिकली उसने h डिस्टेंस कवर किया, और हॉरिजॉन्टली उसने r डिस्टेंस कवर किया, वी कैन सी। क्योंकि जब आप ऐसे प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है जब, तो ऑब्जेक्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उसके दोनों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर होते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर आएगा तो वर्टिकली इतना नीचे आया और हॉरिजॉन्टली इतना आगे आ गया, है ना? इसको ऐसे देखोगे आप, इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे देखोगे। जब यहाँ पर आ रहा है, अगर यहाँ पे जब पहुंचा था तो इसने वर्टिकली इतना नीचे आया, इतनी हाइट नीचे आया, और हॉरिजॉन्टली ये यहाँ पर आ गया, इतना आगे आ गया। जब यहाँ पर आया तो वर्टिकली इसने इतना हाइट कवर किया, और हॉरिजॉन्टली ये यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पहुंचा तो वर्टिकली इसने इतना हाइट कवर किया, हॉरिजॉन्टली इतना किया। तो इसको हम ऐसे देखते हैं, हम दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइट्स को, हॉरिजॉन्टल को कंसिडर करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज हम वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल को नहीं करेंगे। ठीक है, तो y नॉट इज 0, uy इज 0, ay इज g, एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्टिकल हाइट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसको पुट करो एंड गेट द वैल्यू। एंड t वी कैन राइट, यूजुअली वी राइट फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट वी write capital T, so we can write T as capital T. Okay, now put the values here. You'll get h is equal to 0 plus 0 into T plus half gt square. So from here we have h is equal to half gt square, or we can write T as, अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे, टू उस साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, g मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, so T is square root of 2h by g. So this is time of flight. You can enclose this formula in the box. We'll be using these formulas for numerical problems. ठीक है, तो ये आपको करने वाले हो आप लोग, तो इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करो। डन? हॉरिजॉन्टल रेंज में कोई डाउट है आपको? No, ma'am. No. नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, h हो गया, which is half gt square, ये तो निकाल लोगे। इसके अलावा yes, velocity at an instant. Write this, velocity at an instant. Velocity at an instant के लिए क्या करते हैं? We choose an arbitrary point, as we have this point px, y, and we just write the, because here at this point velocity is different, so and this is the direction of velocity, tangential direction होता है इसका,
and this is the vertical component, this is the horizontal component. Okay, so Vy is the horizontal, Vy is the vertical component, and Vx is the horizontal component. And let's consider this angle B beta. This is beta. Okay, now we will write for velocity at an instant, means at any point of time. At a point of time, what is the velocity? किसी point of time पे object की velocity क्या है वो निकालना है. So if we are considering at point P, and now we are going to find velocity at point P. कैसे find करोगे बताओ? We can write for horizontal velocity it remains the same, तो ux और vx तो आपका same ही आने वाला है ना, because vx क्या होता है? vx क्या होता है? ux plus axt होगा, right? और ax आपका 0 है, तो it does not exist this term. So vx is equal to ux is equal to u. So horizontal velocity is u. Any doubt in this? And vertical velocity? Vertical velocity we can write as uy आगे plus ayt. This is first equation of motion, and uy is 0, ay is g. So vertical velocity, vertical component of velocity is g into t. Now we can write the resultant velocity. Resultant velocity will be v is equal to square root of vx square plus vy square, and vx square is u square, vy square is g square, t square. ये आपका square root में आ जाए. This is the velocity at an instant. Similarly, we can find, we can write direction. And how do we write direction? Resultant vector. पता है ना हमें direction कैसे निकालनी होती है? Tan beta. Tan beta. I'm writing here. Okay. Tan beta is equal to Vy by Vx. Vy is gt and Vx is u. Gt by u. So this is the direction. Any doubt in this? Any doubt? Nana, Avni, Vinam, कोई doubt है? Horizontal range में, time of flight में, velocity में? No, ma'am. सब कुछ clear है? Avni, Anushka? And velocity at instant एक बार दोबारा समझा. अच्छा, velocity at an instant दोबारा समझो. ठीक है, कोई बात नहीं. देखो velocity at an instant में क्या है कि आपके पास ये हमने arbitrary position consider किया, ठीक है, because object is projected from this height. तो ये कहीं पे भी हम किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें पूछ सकते हैं कि आप बताओ इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग. दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कांस्टेंट एवरी टाइम. अगर आप जहां पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे, आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कांस्टेंट आएगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा, वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज हो रहा है ना. क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ग्रेविटी इन्वॉल्व है, राइट? बिकॉज आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपका Vy इज इक्वल टू uy प्लस gt है. वहां ग्रेविटी है, वहां एक्सेलरेशन है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इज चेंजिंग. एट डिफरेंट पोजिशंस वी हैव डिफरेंट वर्टिकल कंपोनेंट. तो अगर आपको बोला कि यहाँ पे पॉइंट P पे फाइंड द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम या एट दिस इंस्टेंट, तो हम क्या करते हैं? वी जस्ट कंसिडर दिस पॉइंट and we resolve, because velocity, it's the direction we can find by taking the tangent. Just draw a tangent. So this indicates the velocity, final velocity, the resultant velocity ये indicate करता है. So we simply resolve this velocity into rectangular and vertical component. ठीक है? Yes, ma'am. हमारा जो horizontal component है वो तो Vx हो गया, vertical component is Vy. अब जो horizontal component, as we have discussed that there are no frictional forces, no air resistance, no dissipative forces, so we can consider the same velocity u. Horizontal component की velocity को हम u consider कर रहे हैं, और vertical component जो है हमारा change हो रहा है. और यहाँ पे because horizontally velocity is not changing, तो ax क्या है? 0 है ना? ax 0 है. So we'll put ax equals to 0, और आपका जो velocity आएगा at this point of time v t, तो vx आपका u आ गया. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. अच्छा, अब आप जब Vy निकालोगे तो Vy क्या है? uy प्लस ayt, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी है. और यहाँ लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो,
then you are projecting the object in horizontal direction. आप उसको horizontal direction में project कर रहे हो, and there is no vertical component, है ना? vertical component तो यहाँ पे है ही नहीं ना, तो we'll take this uy as 0 and ay as g. तो आपका v आ गया gt. t is the time. t कौन सा टाइम है? t टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, t टाइम है जिस टाइम में ऑब्जेक्ट ओरिजिन से पॉइंट p तक रीच करता है, ठीक है, वो टाइम t है। मतलब यहां से यहां तक p पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा, दैट टाइम इज t, ठीक है। तो ये gt हो गया। अब इसमें बस आपको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वैसे भी cos 90 डिग्री एज वी हैव डिस्कस्ड वो 0 होता है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, एंड vx इज u स्क्वायर एंड vy इज g स्क्वायर t स्क्वायर, तो उसका अंडर रूट ले लिया, बस ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। क्लियर है? Yes, ma'am. थोड़ा थोड़ा अब नहीं अच्छे से क्लियर है? Clear हो गया. Clear. Yes, ma'am. और ऐसे ही आप एंगल फाइंड कर लोगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है ना बेटा, तो कोई बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना आपने कि मैंने एक बार पूछ लिया मैं दोबारा नहीं पूछ सकती। ये मैं मतलब अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे को अगर एक बार और बोलोगे मैं एक बार और समझा दूंगी, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्लियर है? Yes, ma'am. हॉरिजॉन्टल रेंज में हम ऐसे जैसे y का कंसिडर किया ऐसे x का कंसिडर कर लेते हैं, एंड दिस इज द, ये आपका हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्ले मूव हुआ है ना, बिकॉज इनिशियली तो इसके ओवरहेड था, बिल्कुल यहाँ पर था, एकदम इसके ऊपर था, और जब प्रोजेक्ट करते हैं तो थोड़ा आगे जाके गिरेगा ना, तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स आर हो गया। एक्स नॉट को 0 रखोगे बिकॉज इनिशियल पोजीशन आपकी 0 है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन 0 है, एंड टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको इक्वेशन में पुट करोगे एंड यू गेट आर एस हॉरिजॉन्टल रेंज एज यूटी। आर आ गया आपको, यहाँ से टी की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ, तो ये आ गया रूट ऑफ 2h/t जी, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको हो गया। अच्छा, अब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, है ना? You can see at highest point, ये important points to be noted. You can write मतलब in your notebook important points. I'm going to erase this because we have only 5 minutes remaining. I want to just cover this topic today only. I hope this part is clear और किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। In case अगर है आप अभी पूछ सकते हो। Okay, now write points. Number 1, at highest point कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट इज O, इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट, यहाँ पे यू कैन सी वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, है ना? तो वेलोसिटी जो है हमारी वो हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रही है, एंड एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो u and g they are perpendicular. Velocity is perpendicular to g, or acceleration we can say, and vertical component of velocity is 0, only vx exists. This is the first point. Write this. Second point, time of flight, horizontal range and height of the object. इनमें से कोई भी आपकी मास पे मास डिपेंडेंट नहीं है। यू कैन सी किसी के फॉर्मूला में मास नहीं है, यहाँ पे हम मास को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ठीक है। तो ये ऑल दिस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। यस। थर्ड पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी with which the object strikes the ground final velocity with which the object strikes the ground is same as the velocity of projection.
फाइनल वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब जो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट फाइनली रीच करेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, इनिशियली अगर सपोज उसको हमने लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, तो जब वो रीच करेगा ग्राउंड पे और वो स्ट्राइक करेगा पॉइंट सी पे, यहाँ पर जब वो स्ट्राइक करेगा तब उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी। अगेन द सेम कंडीशन, अगर डेसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है, तब अगर है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी, बिकॉज उसको ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो इनिशियली अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइनली जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो उसमें उसकी स्पीड सेम होती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड is same as the velocity of projection. I hope this part is clear. Clear है बेटे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you have written this, everything? Yes, ma'am. Great. कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो।